ऋषय उवाच जं जितं ते अजित यज्ञभावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्तेषु निलिल्युर्रध्वराः तस्मै नमः कारणसूकराय ते। रूपं तवैतन्ननु तुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकं। छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यं दृशित्वं घृशचातुर्होत्रम्। सृक्तुण्ड आसीत् स्रुव ईशनासयो रिडोदरे चमसा कर्णरन्ध्रे। प्राशित्रमासे ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणन्ते भगवन्नग्निहोत्रम्। दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरम् त्वं प्रायणीयो दयनीयदंष्ट्रः। जिह्वा प्रवर्गस्तव शीर्षकं क्रतोः सभ्यावसध्यं चितयो असवो हिते। सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्थाविभेदास्तव देवदातवः। सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः। नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने। वैराग्यभक्त्यात्मजायानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधर। यथा वह्नान्निस्सरतो दता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाद तदा धृतेन ते। चकास्ति शृङ्खोडघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रम। संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता। विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावथा। कः श्रद्धद्दीतान्यत्तमस्तव प्रभो रसां गताय भुव उद्विबर्हणम्। न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं सत्सृजेति विस्मयम्। विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तप सत्यनिवासिनो वयम्। सटाशिकोद्धूत शिवाम्बुबिन्दुभिर्वमृज्यमाना भृशमीशपाविता। स वै बत भ्रष्टमतिस्तवैष ते यः कर्मणां पारमपारकर्मणा। यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीवराहप्रादुर्भावो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओं नमो नारायणाय। ओं श्रीवराहाय नमः।